Hello guys, welcome back to my channel. My name is तेजिश मिश्रा. So guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिज जोन के बारे में. इसके बारे में फ्रिज जोन के बारे में. तो गाइस, यहाँ पे मैं ये डॉट रख रहा हूँ, वहाँ पे आप पढ़ते जाइएगा और लिखते जाइएगा. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट इट. There are two fridge on in the north and the other in the south. Second point, the north fridge zone lies between the Arctic Circle and the North Pole. Third part, the south fridge zone lies between the Atlantic Circle and South Pole. These zones receive extremely rays of the sun. Thus, these zones are very cold. So guys, next page. पहले गाइस आप ये लिख लीजिए. 1 मिनट तक मैं गिन रहा हूँ. So guys, आप लिख चुके होंगे. नेक्स्ट पेज में चलते हैं. So note, these heat zones are separately according to the sunlight received by these zones. Second point, these zones have different angles of sun rays throughout the year, which is why they experience different climates at different times of the year. तो गाइस, आप ये भी लिख चुके होंगे शायद. आई नो गाइस, मेरे पास टाइम कम है, इसीलिए मेरे को आगे बढ़ना होगा. सो थर्ड नोट, latitude and longitude together from an earth grid which help us locate place on Earth's surface. The intersection point of latitude and longitude shows the location of that place. Second point, one real life example where knowledge of latitudes and longitude are circular during air travel. Pilots and air traffic control use these coordinates to negative and ensure the safe and efficient movement of airplanes. Locating places on the globe. Latitude and longitude intersect each other and form a network on the surface of the globe. This network is known as grid. We find the location of any place on the globe with
the help of the grid. Example, the location of New Delhi is 28.38 degree north and its latitude is 77.12 degree east. Longitude and time. There are 24 time zones. The concept of longitude helps to determine the time of a place. We consider 0 degree longitude. Prime meridian is the standard time to calculate the time in different places. Next page. So guys, अभी 2 पेज होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. सो अब तक के लिए बाय गाइस, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा. सो बाय गाइस.